Hello students, greetings to all. Myself Mr. Praveen Gauri. I would like to welcome you all to my YouTube channel. Dear students, here today in the series of my dictionary, we are going to learn some new unfamiliar words. Okay students? Yes, before moving forward, I would like to say thanks to my subscribers, those who have shared it, liked it, commented below the video and subscribed my channel. Now students, without further ado, let's start with the new words. Students, here as I told you, students, words will help you to communicate fluently, spontaneously in your daily communication. So here I have brought you the first word, that is embrace. First of all, we will have the pronunciation of this word. Students, listen to it carefully. Embrace. 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 Yes, student, have you listened to it carefully? Yes, it's embrace. Now let's have the meaning of this word. Embrace means to hold someone closely in one's arm, especially as a sign of affection. Yes, student, to hold with our arms like that. Okay. Second meaning of this word is to hug, grab, Canoodle. accept, support, take up, accept willingly. Yes, student, these are the meanings of this word, that is embrace. Okay, now we will have the meaning of this word embrace in Hindi. हिंदी में इसका मतलब है आलिंगन, प्रेमालिंगन, गले लगना, शामिल करना. ये हिंदी के अर्थ हुए. अब हम देखते हैं मराठी में. आता आपण याचा मराठीमध्ये अर्थ पाहूया. आलिंगन, गळा भेट, स्वीकारणे, अंतर्भूत करणे, वेढणे. Yes, student. In short, in simple word, I would like to tell you to hug somebody means embrace. Okay? जैसे कि हम हमारे मित्रों से हम मिलते हैं, दोस्तों से हम मिलते हैं, जब भी हम मिलते हैं वो गले मिलते हैं. It means we are embracing our friend. तो हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी के अर्थ देखे हैं. अब हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम हमारे लैंग्वेज में किस तरीके से कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम हमारे सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं. ठीक है? तो पहला है मदर एम्ब्रेसेस हर किड्स. स्टूडेंट्स, इसका अर्थ है कि माँ अपने बच्चों को गले लगाती है. ठीक है? जब भी माँ अपने बच्चों को गले लगाती है, बहुत ही प्यार से वो अपने बच्चों को गले लगाती है. तो यहाँ पे कहा गया है कि माँ अपने बच्चों को गले से लगाती है, प्यार से गले लगाती है. याचा मराठीमध्ये अर्थ असा होतो, आई आपल्या मुलांना आलिंगन देते किंवा आई आपल्या मुलांना गळाभेट करते. ठीक है? समझ में आया? नाउ स्टूडेंट, वी विल हैव द सेकंड एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ द वर्ड एम्ब्रेस. ओके, तो दूसरा है स्टूडेंट्स आर एम्ब्रेसिंग द न्यू टेक्निक ऑफ लर्निंग. स्टूडेंट, इसका मतलब है कि छात्र अध्ययन करने के नई तकनीक स्वीकार कर रहे हैं. याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो की विद्यार्थी शिकण्याच्या नवीन तंत्राचा वापर करत आहेत किंवा स्वीकारत आहेत. ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट इज एम्ब्रेस एंड हाउ टू यूज द वर्ड एम्ब्रेस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट वर्ड इज कन्वीन. यस स्टूडेंट, first of all we will have the pronunciation of this word, that is convene. Student, listen to it carefully. Convene. 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 Yes student, have you listened to it carefully? Very good, it's convene. Okay, now we will have the meaning of this word convene. Convene means to call, to come, bring together for an activity or a meeting, assemble, summon, meet, get together. Yes student, all these are the synonyms of the word that is convene. Okay, now we will have meanings in Hindi first. Okay, हिंदी में इसका अर्थ है बुलवाना, बुलाना, आमंत्रित करना,
आयोजित करना. आता आपण मराठीमधील अर्थ पाहूया. याचा अर्थ आहे बोलावणे, आमंत्रित करणे. Yes student, now we will see the use of this word in our sentence. Okay student, so let's start with an example. So the first example is, I have convened my teachers for the celebration of my birthday. Yes student, इसका मतलब है मैंने मेरे शिक्षकों को मेरा जन्म उत्सव मनाने के लिए आमंत्रित किया है. आता याचा मराठीमध्ये अर्थ असा आहे की मी माझ्या शिक्षकांना माझा जन्मदिवस साजरा करण्यासाठी आमंत्रित केलं आहे. नाउ वी विल हॅव द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिवियल. स्टुडंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हॅव द प्रोनाउन्सिएशन ऑफ दिस वर्ड, that is trivial. Students, listen to it attentively. Trivial. 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 Yes student, have you listened to it carefully? Very good. So it is trivial. Okay, and now we will see the meaning of this word, that is trivial. Trivial means of little value, of little importance, or unimportant, minor, insignificant. Now we will have the meaning of this word in Hindi first. हिंदी में इसका मतलब है तुच्छ, क्षुद्र, नगण्य. आता आपण याचा मराठीमध्ये अर्थ पाहूया. क्षुल्लक, गांभीर्य नसलेले किंवा मग महत्त्व नसलेली. नाउ वी विल स्टडी हाऊ टू यूज दिस वर्ड इन द सेंटेन्स. Okay students, so the first example is, the police imposes high fines for trivial offenses. Student, इसका मतलब है पुलिस नगण्य दोष के लिए, अपराध के लिए ज्यादा दंड लगाती है. आता आपण याचा मराठीमध्ये अर्थ काय होतो ते पाहूया. पोलीस क्षुल्लक कारणासाठी जास्त दंड आकारते. Now student, we will have the second example of this word. Okay, he got angry on me for a trivial reason. Yes student, इसका मतलब है एक तुच्छ कारण की वजह से वो मेरे ऊपर गुस्सा हुआ. ठीक है स्टुडंट, याचा आपण मराठीमध्ये अर्थ पाहूया. क्षुल्लक कारणासाठी तो माझ्यावरती रागवला. ठीक है स्टुडंट, समझ में आया आपको? Yes student, have you understood? Very good. So student, we have studied today embrace, convene. So these are the new words for you, and I have told you the meaning of all these words as well as the use of this word. Student, be conscious and consciously use these words in your communication daily. Okay, so that it will fix in your mind and you can use such kind of words anywhere, anytime, spontaneously. Okay student, words are building blocks of learning any language. It will help you definitely while communicating in English language. So student, if you have liked this video, if you have found it useful to you, then like it, share it to your friends, comment below the video. Do not forget to subscribe and press the bell icon so that you will get current notification of new videos. And be connected to learn new words. Thank you. Be connected.